You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, कैसे गवर्निंग करेगा। तो अपर टाउन के जो एलिट्स होते थे वो बाढ़ से बचे हुए रहते थे, और अगर बाढ़ आ जाती थी लोअर टाउन के अंदर तो उसको मैनेज करते थे। I'm really not that cozy. It's up to you, so you decide. You decide. You love me up my words till the coffin's in the dirt. Try to break me like a curse. You know that will never work. I'm a little bit absurd. I like dancing on the verge. Anyone can love a pretty little mansion. But could you love a haunted, haunted house? Oh, could you love me now? A haunted, haunted house. Haunted house. A haunted, haunted house. If you're just looking out. A haunted, haunted house. Broken windows and a warning scribbled on my wall saying that you better turn around. Be the first to try to burn me down. Your move, you do. You love me up my words till the coffin's in the dirt. Try to break me like a curse. You know that will never work. I'm a little bit absurd. I like dancing on the verge. Anyone can love a pretty little mansion. But could you love a haunted, haunted house? Oh, could you love me now? A haunted, haunted house. A haunted, haunted house. If you're just looking out. A haunted, haunted house. Could you love a haunted, haunted house? Oh, could you love me now? Haunted, haunted house. Haunted house. If you're just looking out. Haunted, haunted house. Why steal the coffins in the dark? Anyone can love a pretty little mansion. छोटे-छोटे मिले हैं जिसमें ज्यादा लोग नहीं रह सकते। जो बड़े घर मिले हैं उन बड़े घर के अंदर ज्यादा लोग रह सकते थे, 7 से 8 रह सकते थे, लेकिन वो बहुत कम मिले। इससे ये साबित होता है कि सभ्यता के शहर एकल परिवार आधारित थे।
और वेरियस प्रोफेशंस वेयर प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने आपको बोला किसान भी थे यहाँ पे, व्यापारी भी थे यहाँ पे, कैटल रेयरर्स भी थे यहाँ पे, पुजारी यानी प्रिंसली क्लास भी था यहाँ पे, उसके अलावा सैनिक भी थे यहाँ पे, लेबर्स भी थे यहाँ पे, गोल्ड स्मिथ भी थे यहाँ पे, कॉपर स्मिथ भी थे यहाँ पे। तो कई तरीके के प्रोफेशंस हमको इस सभ्यता से हासिल हुए। अब हम बात करते हैं कि सभ्यता की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था कैसी रही होगी। सबसे पहले बार्टर सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि एक तरीका होता है व्यापार का कि मैं आपको कुछ चीज खरीदता हूँ या पेन खरीदता हूँ, उसके बदले में मैं आपको 500 रुपए करेंसी देता हूँ। ये करेंसी का एक्सचेंज सिस्टम। लेकिन अगर मैं आपको 500 रुपए का पेन खरीदता हूँ, मेरे पास करेंसी नहीं है और इस करेंसी के बदले में मैं आपको ये मोबाइल फोन दे देता हूँ, तो ये है वस्तु विनिमय। ये क्या है? वस्तु विनिमय। इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तो वहाँ पे इतिहासकारों ने जितना भी एक्सकैवेशन किया, इतिहासकारों ने जो भी आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्व विद्ता थे, उन्होंने जो एक्सकैवेशन किया, उस एक्सकैवेशन में उनको ऐसा कुछ करेंसी जैसा कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने कंक्लूड किया है कि वस्तु के बदले वस्तु लेने देने का प्रचलन रहा होगा जो दुनिया की दूसरे सभ्यताओं और इलाकों में रहा था। और इसलिए पहला पॉइंट जो याद रखने वाला है इसके इकोनॉमी में वो है बार्टर सिस्टम। दूसरी चीज कि ये लोग बार्टर सिस्टम के जो ट्रीट करते थे उसको अपनी इकोनॉमी कहाँ से अर्न करते थे, विजिट कहाँ से करते थे, तो वो करते थे एग्रीकल्चर। देखिए जो इलाका है सोना नदी के किनारे पंजाब का, उस समय राजस्थान में करेंसी तो ले ही रहे हैं, जब हम कोई वस्तु उनको दे रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो